Assalamualaikum dear students, and our today's topic is the potential difference and EMF. So first we need to talk about potential difference. By definition, the difference of electric potential between 2 points in an electric circuit is known as potential difference. Okay, mathematically we can write it as del V equals to del U by Q. So basically the difference between potential energy that the charge may face on both sides of an electrical device is known as the potential difference. Okay, so a charge may have like a potential energy at this point, which is equal to this height. This is the height which shows the amount of potential energy that the charge has. But right at the other point, the charge has a potential energy which is a little higher than the initial energy. So the difference between these two potential energies is called the potential difference. The difference between these two energies, the potential energies that the charge may experience when it is at two different points across an electrical device, it's called the potential difference. Okay, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास for example we have a charge E minus which is electron. We have an electron. अगर हमारे पास एक electron है, then Ui is the amount of potential energy that the electron has to stay over here. लेकिन दूसरी ही तरफ इस साइड पर स्टे करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी? This energy is a little higher than the initial energy. This difference between the energy is called the potential difference. So the potential difference, the difference between potentials at 2 points, is equal to the difference between potential energies between these 2 points divided by the charge q that experiences that energy. Okay, so difference between potential energy between 2 points divided by the charge that experiences it equals to the potential difference of that device across that device, that electrical device. Hence the difference of potential energies that a unit charge will face on either side of the electrical device can also be termed as potential difference. Okay, so यहाँ पर हमने just क्या किया था, एक voltage source लिया था एंड एक यहाँ पर हमने कोई भी डिवाइस अटैच की. यहाँ पर मैंने एक बल्ब अटैच किया. सो बल्ब के एक साइड पर एनर्जी डिफरेंस होगी, दूसरी साइड पर एनर्जी डिफरेंट होगी बिकॉज कुछ एनर्जी ये बल्ब भी कंज्यूम करेगा. सो क्या होगा, देयर विल एग्जिस्ट a potential difference. First of all, energy difference, and energy difference per unit charge. When a charge experiences it, it is called the potential difference. Okay, so this is basically the potential difference. Just not get confused with the potential. The potential is denoted by V and potential difference is denoted by del V. It is the difference between potentials at 2 points. Now coming to electromotive force. You might first think that this is a kind of force that we're going to talk about, but this is not really a force. This is similar to just potential or potential difference. Okay, this is a kind of potential. So the energy required to move a positive charge by a source to move it from negative terminal to positive terminal within the source is called EMF. Okay, so in simple words हम कह सकते हैं, suppose we have a battery over here. We can take any other source, but हम यहाँ पर एक battery consider करते हैं. So this is the positive terminal of a battery. This is the negative terminal of the battery. हमें पता है एक बैटरी के अंदर भी बहुत सारे सर्किट होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, and these two terminals somehow get connected with each other. इनके पास कनेक्शन का कोई ना कोई रास्ता होता है. So if we have this battery and we have connected a bulb over here. Okay, just take it as a bulb and then connect that wire to the
नेगेटिव टर्मिनल, अगर हमारे पास एक सर्किट है इस टाइप का, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने वायर अटैच की, बीच में एक बल्ब अटैच कर दिया एंड देन नेगेटिव टर्मिनल पे दोबारा एंड कर दी। सो बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करें और पॉजिटिव टर्मिनल पे एंड हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बैटरी के इंटरनल पार्ट से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएं, ओके, बिकॉज दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट्स द इजीएस्ट पाथ दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉलो। सो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा सारा करंट ओरिजिनल सर्किट में फ़्लो होने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड वी हैव टू स्टॉप दिस, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड to just, or the potential required to just stop these electrons from moving from negative terminal to the positive terminal is called the electromotive force। वो फोर्स जो कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दो काम करती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने से रोकती है। रिमेंबर दैट मैं जो बता रही हूँ ये इलेक्ट्रिक फ्लो है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है। कन्वेंशनल फ्लो में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्जेस की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने से रोकती है। दैट्स द कन्वेंशनल डेफिनेशन। मैं जो बता रही हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, एंड दैट इज it actually prevents electron from going from negative terminal to the positive terminal within the battery। okay, एक काम ये हो गया EMF का। सेकेंड काम ये है that it just pushes these electrons from negative terminal to the positive terminal। always remember that positive terminal is always at the higher potential and negative terminal is at the lower potential। लेकिन होता क्या है, current is always directed from the higher potential to lower potential। okay, so to make a secure flow of current हम क्या करते हैं, हम बैटरी इसलिए अटैच करते हैं ताकि EMF प्रोड्यूस हो। एंड EMF is the potential, EMF is actually a kind of potential which just prevents the excessive amount of positivation or of this terminal or negativation of this terminal। okay, so बजाय ये कि ये पॉजिटिव टर्मिनल अपने मज़ीद इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएं एंड ये टर्मिनल मज़ीद नेगेटिव चार्ज हो जाए। टू प्रिवेंट ऑल दिस एंड a kind of potential has to be developed between these two terminals which actually pushes these electrons through the wire, and this positive terminal actually collects it rather than traveling from the inside of the battery। okay, so what are the two jobs of electromotive force? It prevents the negative charges from going into the positive terminal by traveling inside of the battery। The second task is that it just pushes these electrons through the circuit until they reach the positive terminal so that they complete the whole circuit rotation as they are expected to। okay, so this is the electromotive force। इसका नाम ज़रूर force है, but don't get confused, this is not a force, this is a potential, this is a kind of circumstances or a phenomena you can say। this is a potential that establishes between these two terminals so that current can be supplied to the outer wire rather than the internal wire of the battery। so the energy required to move a positive charge by source to move it from negative terminal to positive terminal within the source is called EMF। okay, so it is denoted by this is epsilon। हम इसे epsilon कहते हैं, इसे हम E भी कह सकते हैं। अगर हम लोग जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो हम इसे E भी कह सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रीक लेटर एप्सिलॉन विच इज़ इक्वल टू E। आपकी बुक में E दिया हुआ है, मैंने एप्सिलॉन भी लिख दिया है बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द बुक्स ये सिंबल यूज़ होता है, E यूज़ नहीं होता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। बुक में जस्ट आपको समझाने के लिए E लिखा हुआ है। ओके, लेकिन हम जल्द ही जब अपने नेक्स्ट टॉपिक्स या नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो उसमें E की जगह एप्सिलॉन ले लेगा।
So this is the correct unit or correct symbol of electromotive force, which is equal to the work done required to move this charge throughout the circuit. So the work done, EMF, equals to the work that is needed to be done on a unit charge. In this case we have a unit negative charge, to move it from negative terminal to the positive terminal. This is the electronic current. But इसी को आप थोड़ा सा opposite करके भी लिख सकते हैं. पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख दें, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, एंड देन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, to show the conventional current. It would become that the energy required to move a negative charge by source to move it from positive terminal to negative terminal. This would become the definition for कन्वेंशनल करंट. लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट बताई जिसमें नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से ट्रैवल करेगा एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. सो नेगेटिव टर्मिनल पर एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा. दैट पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टी है, यानी ये बैटरीज में होगी, ये सेल्स में होगी, किसी भी तरह का जो भी हम सोर्स रखते हैं, बैटरी रखते हैं, ईएमएफ उसमें होगी. ईएमएफ कभी भी आपके रेजिस्टर में या आप जो बल्ब अटैच करते हैं उसमें या कैपेसिटर में उसकी ईएमएफ नहीं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ओके, ईएमएफ जस्ट हमारी बैटरीज में या सेल्स में जो भी सोर्स होता है उसमें एग्जिस्ट करती है. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच एवरीवन.